ठीक है. Let me come back to the things we were talking about. But I'm Um, doing a sadhana. Sorry, I'm doing a sadhana. So we've just started it. So that's also the reason why. you want to talk about that? Is it fine? Yeah, it's I just mean, it's a very personal thing, yeah, so it's a I do very. not ask people about this I don't want sadhana. to go into details, but it's a tantric sadhana, Hmm. which is again strange because tantra does involve a lot of other practices, but this tantric sadhana does require a certain amount of detoxing. So that's why I'm vegetarian. So now I'm in the middle of this sadhana. I would love to know more about it, but if you don't want to talk It on the gives you camera, it is fine. it gives you a lot of power, a lot of strength. You get Shiva's strength. I was about to come to that. Yeah, you get Do you preach to a feminine or a masculine? I mean, both energies are there. no, there are, but there is a leaning to it, right? Yeah. So the thing with me is that I do the Das Mahavidya Tantra a lot, which is to the Devis. Okay. But I also I have a connection with Kal Bhairava. With Bhairava, Okay. yeah. And that's for Shiva. So I have a connection with Bhairava and with Shiva. So that again Kalva is Bhairava is a protector. yeah. So that is very so that in me is very powerful. So that connection is direct. That on that level. So this sadhana is veering towards. It's a very tough sadhana to do. And the last 7 or 8 days of the sadhana are going to be extremely tough. I'm going to completely sort of disappear. So I won't be accessible. There are certain things that you wear black while you do this to There are absorb different energy. things. Yeah, there are certain things you wear black. There are certain things you do in certain other formations at certain places. So those are things that. But you see, if I say something that and then that clip ka utna sa ho jayega, it'll be taken out of context and people will either mock it or run it down, which for me would hurt me because this is very important to me. Or people would sort of make fun of it or would sort of question it, or somebody might even get offended by it. So I don't want to get there. But they're very powerful sadhana that I'm doing right now. So again, it's got to do a lot with power and protection. You're right about the protection part. No, I read about Kal Bhairava. Yeah, it's very protective. In Isha, they say that there would be an consecration. So Sadhguru does a lot of tantric consecrations. That's true. I was about to tell you. So Yeah. So Dhyanalinga is there. Devi is there. I have Devi at home. Devi Yeah. Goody. I'll make you meet her. So she's the owner of the house. We treat her like that. So I'll tell you this one story. I was going to Mahakal, Okay. and before going to Mahakal, I was I was thinking about something happened the previous night, and I thought about Kamakya Devi. On the morning, I was going to Mahakal. So I was going with a couple of friends. So I told one of my friends that I thought of Kamakya Devi, and coincidentally, she'd also thought of Kamakya Devi a day before that. So we said, अभी महाकाल हो जाएगा तो फिर हम कामाख्या देवी के पास जाएंगे. Cut to, we land in Indore. Somebody comes to receive us, etc. And those people insist that we should wear yellow. अब मैं महाकाल पहले गया हूँ. My friends who are also coming with me, they've also been to महाकाल. ये rule है नहीं, but फिर भी ये insist कर रहे थे कि हम yellow पहने. तो they said you please come to our house. ओ इंडोर एयरपोर्ट के बाजू में उनका घर था. उनका जो घर था एक बहुत बड़ी हवेली की तरह थी. खैर, we go to their house, whatever people are changing. I'm exploring the house next door क्योंकि हवेली थी उसके बाजू में एक हवेली जैसा था. And when I go into that house, which was like an abandoned haveli, very old, वहाँ पे मैं अपने सामने देखता हूँ एक मूर्ति कामाख्या देवी की, which is must be 10 feet, 11 feet. So I called up my friend who had also कामाख्या, and हम flight पे बात कर रहे थे कामाख्या देवी का. And I said, you just come here right now. Wherever you just come here. So she went to that other house. And we were stunned to see Kamakya Devi. Now in Kamakya Devi, men don't touch her, the Murti. Yeah. They stay away. So obviously, I bowed my head. But the girls do it. They can touch her. Men can't. So Sara Ashirwad liya. So the owner of the house who had come to receive me, she and her kids, they came with this other friend of mine. And they said कि हाँ यहाँ पे कामाख्या देवी की स्थापित मूर्ति है, but किसी ने आज तक नहीं, मतलब people are not distinct, it is here, we don't let people come here, but Devi called us and nobody knew about. I mean, these people knew, otherwise nobody in that city also knows. And it was स्थापित देवी की मूर्ति. It's me a calling.
How was your And we spoke about Kamakya Devi in the airport lounge T3 because we were flying from Delhi to Indore? इंदौर. और वो लाउंज के अंदर एक यूनियन मिनिस्टर आकर मेरे साथ बैठे. तो वेयर आई वाज सिटिंग, वहाँ टीवी चालू था, तो एक यूनियन मिनिस्टर आते बैठे, क्योंकि जहाँ वे बैठे थे टीवी पे कोई दिक्कत थी, तो वो आते बैठे. एंड वी स्टार्टेड स्पीकिंग एंड द यूनियन मिनिस्टर मी, और उसका ओ एस डी ऑब्वियसली मुझे टीवी पे देखा था. आई ऑल्सो न्यू एज द यूनियन मिनिस्टर. एंड द यूनियन मिनिस्टर से, अरे आपको जाना चाहिए देवी के वहाँ. इमेजिन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बघेल जी, मैं नाम ले रहा हूँ, एसपी बघेल जी, आगरा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर करंट. इमेजिन दिस. और मैं लैंड होता और देवी मिलती, देवी बुलाती है. अब आप इसको क्या बोलोगे? साइंस बोलो, कोइंसिडेंस बोलो, आस्था बोलो, मेरी स्टुपिडिटी बोलो, आपको जो बोलना है वो आपकी मर्जी है. No, this is mere devotion. This is devotion. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? No one can explain this. I got a Devi in my. I was talking to a friend and I got a Devi in my dream, and there were certain things that the Devi told me. I was having a discussion with a friend of mine, which this Devi told me, and I had no idea who this Devi is. I had zero idea. I had zero idea. My friend had zero idea. We start researching what is I'm trying to describe. We speak certain things, certain shloks came. This is my dream in my sadhana. While I was having this sadhana, I started sweating, shivering. Later on, we realized, took us 2 days of research or something, the Devi that I met or who gave me the blessings was a Devi called Lajja Devi, which most Indians don't know about. I also didn't know about it. And she told me to tell 3 things to my friend. There is no way I would know about it. One thing about that, which were messages in the phone. One thing was the past, one thing as a present, as I said it happened, and one thing was the future, which happened 3 or 4 days later. It's called Lajja Devi. So I met Lajja Devi. उन्होंने blessings दिया. I was shivering. I was sweating. This was, I think, August, September. So it wasn't that hot, and I was sweating. Like I was in AC with sweating, like sweat. अच्छा उन्होंने 28 degrees पे नहीं रखा था गवर्नमेंट ने AC. बहुत दिक्कत हो जाती. How was your darshan at Mahakal? So I'll tell you. Did you attend the आरती जो सुबह होती है, भस्म आरती? So I'm not making this up. पानी है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ. सारा we reach 1:32 in the night. और वो सारा कहा था कि जनरली 1:32 से भीड़ होती है क्योंकि तो जो हम 3-4 लोग थे और 2-3 लोगों ने सारा अपना प्रोटोकॉल का किया था और मेरा भी. तो उसमें से एक पुलिस वाला था प्रोटोकॉल में. सब ने कहा था आप 2-2:15 बजे तक आ जाइए. ठीक है, 1:30-1:45 बजे तक हम पहुंच गया. मेरा जो प्रोटोकॉल, मैंने जिनसे बात की थी वो जो एक वहाँ पे प्रीस्ट थे, मेन प्रीस्ट, उनसे बात की थी. उन्होंने किसी को बोला था प्रोटोकॉल देखने के लिए. तो मैंने 1:30-1:45 बजे उसको कॉल किया कि भाई मैं पहुँच गया हूँ. क्या इतना जल्दी क्यों है आप? 3:30-4 बजे. मतलब आप भाई अंदर जाना है, यहाँ पाओ. ठीक है, खैर 2-3 टाइम्स आई सेड ब्रो हम पहुँच गए, आप ले लो अंदर. नहीं ब्रो आप जाओ, मतलब ब्रो नहीं, मतलब आप जाओ. साइड नोट, अब 1:30 बजे तो हम जाकर फिर वो पार्किंग में गाड़ी में बैठे थे, जो हमें सिक्योरिटी था ये सब था. 3:30-4 बजे उसने कॉल किया. वी वेंट. अब वहाँ पर 3:30-4 बजे तक सारी भीड़ खत्म हो गई थी. सब लोग मंदिर के अंदर चले गए थे, सब लोग. हम ही एक थे लफंगे, हम. वो बेचारा पंडित जी हमें ले जा रहा, हम गुंडों को अंदर. एनीवेज वी वर लास्ट, हम पापी लोगों को. अब मैं सोच रहा यार 4 बजे ले जा रहा, भस्माती तो पीछे ही मिलेगा. बट ठीक है, अभी हमें एंजॉय करना था, हम मस्ती में थे अपने. ठीक है, उसके पहले हम गए थे भैरव जी का दर्शन लिए, परमिशन लिए महाकाल के लिए, उज्जैन के लिए भी. ये बात हुई.
अब हम आते हैं, तो ये 3:30 पौने 4 बजे की बात है, जो प्रोटोकॉल वाला ले गया है हमें। ब्रो मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मानिए, ठीक है। वो दूसरे गेट से ले गया हमें, और वहाँ पे एक आईएएस कपल भी था, या शायद रिटायर्ड आईएएस थे, जो भी थे, वो एक ऑफिसर थे, उनकी वाइफ थी, और हम 3-4 लोग थे जो थे। बाकी सारे लोग मंदिर में थे, और ये गेट था बिल्कुल बाबा के सामने, भोले बाबा के सामने, ठीक है। बोले अब हम खोलते गेट, आइए। तो हम खड़े थे, ये आईएएस कपल भी आए, जो भी था, ये अंकल जो थे एकदम, नहीं नहीं मेरे को पहला, वो उनसे, उनका भी कोई प्रोटोकॉल हुआ था, मेरा नहीं था, उनसे लड़के रहे हम पहले आए हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हम सब अपनी मस्ती में थे, अरे बिल्कुल भोले बाबा की मस्ती में थे। ले आप आइए बीच में, आप जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके बाद हैं। अब 5, हम 4 थे, वो 2 थे, 6, क्या फ़र्क पड़ता है, वो गेट हमारे लिए खुल रहा था, बट वो उसको पहले ही जाना था, वो और उसकी पत्नी पहले जाते, हम लोग 4 जाते। ब्रो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं नंदी के पास बैठा था, मैं नंदी के पास बैठा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं नंदी के पास बैठा था, बिल्कुल भोले बाबा के सामने, फ्रंट रो में बैठा था। और ये आईएएस कपल जो धक्का मारा ना अंदर को, या जो भी थे, रिटायर्ड आईएएस कपल, वो मेन प्रीस्ट आते हैं, उनको देखते कहते हैं आप पीछे जाइए, क्या है यहाँ पर आप। यहाँ तक कि मेरे साथ मेरा एक जो पार्टनर था जो आया था, वो कहीं और था, उसको मैं बोला आकर आकर बैठे। इट वॉज दैट वे ब्रो, मैं भोले बाबा के साथ बैठा। अच्छा ये सारा ख़त्म हो गया, सारी चीज़ ख़त्म हो गई, भस्म आती। अब हम सोचे हम जाते बाहर, और अब इंदौर से हमें आना है दिल्ली, तो हम उज्जैन से इंदौर, इंदौर से दिल्ली, तो फ्लाइट टिक लेनी जो भी। तो मेन प्रीस्ट आते कहते हैं आप आइए ना, पीछे के द्वार से आप आइए, आप जल अभिषेक कीजिए। अब इसको मैं क्या बोलूँ, चमत्कार बोलूँ, मैंने कोई चीज़ के लिए मैंने पुश नहीं किया, बस उतना क्या किया, थोड़ा प्रोटोकॉल देख लेना, मैंने कोई चीज़ नहीं मांगी। अब आप इसको क्या बोलोगे, ये इस वक्त हुआ मेरे साथ उज्जैन में, This आप is इसको good. कुछ भी बोल सकते हो।